हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। माय नेम इज रुद्र गौतम एंड टुडे वी विल डिस्कस all the important international space missions. For example, you can see the biggest experiment ever, that is International Space Station. So International Space Station we will go through, and various different international space missions like Hayabusa mission, like Hubble telescope, James Webb telescope, and what is their role, why we are infusing such a humongous amount in these missions. So we are going to discuss each and everything in this lecture, right? So first and foremost we will discuss International Space Station. What is International Space Station and why this body is required? See, actually जब 1969 में पहली बार चंद्रमा पर अमेरिका ने अपने मानव को उतारा, तो उसके बाद उसको यह आभास हो गया कि चंद्रमा पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल नहीं है और इसलिए हमें ज़्यादा लंबी यात्रा तय करनी होगी, मतलब या तो मार्स या फिर किसी अन्य प्लैनेट पर। और मार्स पर जाने के लिए कम से कम मिनिमम 10 मंथ्स 10 महीने का समय लगता है। तो हमें कोई एक ऐसा डॉकिंग स्टेशन की आवश्यकता थी, जो डॉकिंग स्टेशन, ऐसा एक डॉकिंग स्टेशन जिसमें हमारे ह्यूमन बींग्स लो ग्रेविटी पर भी रह सकें। यस और नो? सो ऑन विच आर ह्यूमन बींग्स कैन रिमेन फॉर लो ग्रेविटी। सो इन दिस वे यहां पर शुरुआत होती है, एक बेसिक सी शुरुआत होती है भारत की, दुनिया भर के देशों की, कि हम एक ऐसा स्पेस स्टेशन भेजें जो हमारे लिए एक डॉकिंग स्टेशन हो, ताकि हमारे ह्यूमन बींग्स यहां पर रह सकें और वो ऑब्जर्व कर सके कि स्पेस में किस किस प्रकार के इश्यूज क्रिएट होते हैं, राइट? तो ये है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दिस इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहां पर हमेशा 5 to 6 ह्यूमन बींग्स, हमेशा यहां पर हमेशा 5 से 6 मानव रहते हैं। वो रिसर्च कर रहे हैं कि यदि माइक्रो ग्रेविटी पर रहेंगे और स्पेस एनवायरनमेंट में रहेंगे लगभग 300 से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, तो हम पर क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और जब हमको एक लंबी जर्नी करनी होगी मंगल के लिए, तो हमारे ह्यूमन बींग्स तैयार रहें 10-10 मिनट 10-10 महीने के भी टाइम ट्रैवल के लिए। यस और नो? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेस स्टेशन। दिस इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट? सो अंतरिक्ष में अब तक के सबसे बड़े सहयोगी उपक्रम में से एक है। रीजन क्या है? एक्चुअल में उस समय पर जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज थे, यूएसएसआर एंड यूएसए, दोनों का अपना एक बहुत विशाल का कंपटीशन चल रहा था, कट थ्रॉट कंपटीशन इन टेक्नोलॉजिकल अपर हैंड। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो इस प्रकार के उपक्रम देखने को मिले कि अंतरिक्ष में अकेला देश, कोई भी एक देश इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं भेज सकता। तो सबसे पहले कुछ कॉम्बिनेशन के साथ में भेजे गए। सबसे पहला एक मॉड्यूल भेजा गया, फिर दूसरा मॉड्यूल भेजा गया, और इस तरह से डिफरेंट मॉड्यूल्स पे मॉड्यूल्स भेजे गए और उनको स्पेस में जोड़ा गया। दे आर कंबाइंड इन स्पेस, राइट? सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, IIS शॉर्ट के लिए, एक मानव निर्मित चमत्कार है जो हमारे ऊपर लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में तैर रहा है। तो अंतरिक्ष में अब तक के सबसे बड़े सहयोगी उपक्रम में से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मानव निर्मित चमत्कार है जो हमारे ऊपर लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में तैर रहा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव वेंचर एवर इन स्पेस, एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज मैन-मेड मार्वल फ्लोटिंग इन स्पेस अबाउट 400 किलोमीटर। तो ये 400 किलोमीटर पर फ्लोट कर रहा है और ये लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। लगभग 90 to 120 मिनट्स में 90 to 120 मिनट्स में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक कंप्लीट चक्कर कर लेता है पृथ्वी के चारों।
तो इस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी वस्तु है जो सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी से सबसे चमकदार दिखाई देती है। एंड यू कैन यू बिलीव इट कि इट्स साइज इज अराउंड साइज ऑफ फुटबॉल। ये एक फुटबॉल के मैदान के साइज के बराबर एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। यहां पर लगातार मॉड्यूल्स ऐड किए जा रहे हैं। इवन हम लोग जो स्पेस में डेब्री है उसको भी रिमूव करेंगे इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मदद से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे खास बात यह देखिए आप कि हमने वहां पर सब्जियां उगाना भी शुरू कर दिया, एल्गी शैवाल को भी उगाना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार का एक शैवाल है क्लोरेला। क्लोरेला वो शैवाल है जिसको उगाया गया, क्लोरेला वो शैवाल है जिसको उगाया गया स्पेस में। और ये स्पेस में मानव की एक ऐसे कदम है जिसमें अबाउट द साइज ऑफ राइट, so it is a man-made object visible to naked eyes. It is a man-made object that is visible to naked eyes. ह्यूमन बींग्स का सबसे बड़ा विशाल काय इक्विपमेंट कोई बनाया गया तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज अ डॉकिंग साइट, राइट। नाउ शुरुआत कैसे होती है आप देखेंगे कि 1969 में जब एक रैट रेस लगातार चल रही थी अमेरिका और रशिया के बीच में, तो रूसी सरकार ने देखा कि जो मून रेस है कि पहले अमेरिका मून पर पहुंच गया 1969, तो रशियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द स्पेस स्टेशन कॉन्सेप्ट एज द मेजर डायरेक्शन फॉर द सोवियत मैन्ड प्रोग्राम। सो यहां पर सोवियत मैन्ड प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। उन्होंने अपना खुद का स्पेस स्टेशन का सपना आखिरकार तब परवान पर चढ़ा जब 1971 में रशियंस ने सैल्यूट 7 अर्थात सैल्यूट 7 से शुरुआत करते हैं, जिसे 1982 में लॉन्च किया गया और 1985 में यह गंभीर बिजली की खराबी के कारण अपंग हो गया। इट पेव द वे फॉर द मोर एडवांस्ड मीर स्पेस स्टेशन। तो सबसे पहला जो स्टेशन था वो एक्चुअल में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सॉल्यूट। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आता है नंबर एंड इट वाज मीर स्पेस स्टेशन। ये कौन सा था, मीर स्पेस स्टेशन था, राइट। देन व्हाट हैपेंड इन 1973 नासा ने भी अपना स्काई लैब लॉन्च किया। इस रैट रेस में उन्होंने वो रैट रेस में अमेरिका भी शामिल हो गया। बट होता क्या है कि ये दोनों ही, ना रशिया का ना अमेरिका के जो स्पेस स्टेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और तब क्या होता है कि 4-5 देश मिलकर, जैसे इवन रशिया और यूएसए वहां पर कोलैबोरेट करते हैं स्पेस के इस एक्सप्लोरेशन को और इंप्रूव करने के लिए। तो रशियंस एंड अमेरिकन्स जॉइंट वेयर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एज वेल एज जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज, ये सभी कोलैबोरेट होके एक रिसर्च स्टेशन बनाना स्टार्ट करते हैं और उसी स्पेस स्टेशन को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आप लोग देख रहे होंगे स्काई लैब, ये अमेरिका के द्वारा भेजा गया, अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद में अंतरिक्ष में हुआ क्या, द स्पेस स्टेशन was eventually abandoned and panic struck every nation in 1979. News spread that it was about to crash on Earth. And finally ये जो स्काई लैब है, भारी भरकम प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका, वो क्रैश कर जाता है इन द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब यहां पर सभी देश कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ए परमानेंट Earth station capable of housing laboratories for various scientific experiments was so high that a concentrated and collaborative effort from various countries was required, right? So यहां पर क्या होता है, सभी देश मिल जाते हैं, collaborative approach के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। So this is a new pathway for international space station. So this is the base module of International Space Station, the Zaira, and then we added multiple modules, right?
So Zaira was the first module of International Space Station. The International Space Station began to take shape when Russian Proton rocket carries first piece, Jeda, module in the low Earth orbit around 420 km above Earth. Zaira also, Zaira, it is also called sunrise. So, and you know what, for long time, बहुत लंबे समय तक रशियंस वो ही केवल ह्यूमंस को स्पेस में ले जाने की कैपेसिटी रखते थे, बट एक समय ऐसा आया कि स्पेस एक्स ने भी इस पूरी प्रक्रिया को सीख लिया. प्रीवियसली इट वाज ओनली रशियंस, और रशियंस के ऊपर डिपेंडेंट थे अमेरिकन्स कि जब भी कभी स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को भेजना होता था तो हु सेंड देम? रशियंस, एंड अमेरिकन्स वर डिपेंडेंट ऑन देम. सो इस तरह से क्या होता है कि रशिया, इन मैनी एरियाज रशिया इज फार अहेड देन यूएसए इन दोज eras. So 20th November 1998, what happened? It launched 20 November 1998 from Baikonur. Baikonur is the launching site of Russia. 2 weeks later, in December 1998, crew of the space shuttle endeavored and launched the utility module Zaira and first ISS assembly. So पहली बार assembled करना स्टार्ट करते हैं जायरा में. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मॉड्यूलर निर्माण में अंतरिक्ष में बिट्स और टुकड़ों में इकट्ठा किया गया. अब देखिए आज का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है. इसमें बहुत से मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग देशों के जो लोग हैं उनको रहने के लिए अलग अलग प्रबंध किए गए. माइक्रोग्रेविटी पर एक्चुअल में रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी होती है एस्ट्रोनॉट्स को. एटलीस्ट 2 आवर्स एक्सरसाइज, अदरवाइज ब्लड ब्रेन में चला जाता है. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज देयर इज माइक्रोग्रेविटी, देयर इज नो ग्रेविटी देयर, देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर, एंड यहां पर इंपैक्ट होता है ह्यूमंस जो वहां पर रहते हैं. तो ह्यूमंस के लिए स्पेशल फैसिलिटीज वहां पर की गई. बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यही रिसर्च करते हैं कि क्या ह्यूमन बींग्स लंबे समय तक के लिए स्पेस में सरवाइव कर पाएंगे. दिस इज द बिग क्वेश्चन. सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मॉड्यूलर निर्माण में अंतरिक्ष में बिट्स और टुकड़ों में इकट्ठा किया गया. यह 5 भाग लेने वाला अमेरिकी एजेंसियों के बीच एक संयुक्त, दैट मीन्स देयर आर 5 डिफरेंट पार्ट and they join together, right? For example, you can see here European Space Agency is written here, means this part is related to European Space Agency. So a single module with multiple countries added, multiple countries had added the different assemblies, and this combined form is called International Space Station. So International Space Station is assembled in bits and pieces in space in modular construction, and it is a joint project between 5 participating space agencies, and these names are, so this can be a question in your exam. The agencies are NASA, National Aeronautics and Space Administration, NASA. Then it is Roscosmos, that is Russian Federal Space Agency. Then it is JAXA, Japanese Aerospace Exploration Agency. Then it is European Space Agency, and then it is Canadian Space Agency. So these 5 different countries combined together, and they make this International Space Station. These countries you should know, and crew member conduct experiment in biology, physics, astronomy, meteorology and other fields. Because what is the impact of solar winds on the astronaut's body? What is the impact of microgravity? Is there possibility to generate oxygen with the help of chlorella, the algae? So scientists are doing everything that possible in space because they want to understand, if we will not on Earth, how
in the different situation we can create our own exobiological system, yes or no? So in this way, crew member conduct experiment in biology, physics, astronomy, meteorology and other fields that are among the most complex scientific and technological endeavor ever undertaken, right? So he is inside this International Astronomical Unit, right? And they used to float. If we drop a water, it will fly, right? This is the situation in the International ISS. So you can see here, International Space Station in 2023, its 15th anniversary was on 2013, and there are different chambers. There are Russian chamber, there is American chamber is there in the International Space Station. In this way, they used to bind themselves so that they do not float. They used to do the exercise. What they eat actually in the International Space Station, so there is a space food, as well as whenever they urinate, that urine will be purified, because 95% in urine is water. So it used to refined, and we retake the water from that urinate. So in this way, International Space Station, where human beings are living in critical life. And nowadays, one more topic that is in discussion. You must have heard about this. Sunita Williams, and I think long time she is there, and yet there is no procedure to came her back. So यह पृथ्वी के नग्न आंखों से देखे जाने वाले आकाश की तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है, आफ्टर मून, सन, एंड दिस वन इज द at third position. It is the third brightest object in the sky as seen with the naked eyes from Earth, right? In 2014, अमेरिका, रशिया, यूरोप, जापान द्वारा फ्लोरिडा, कजाकिस्तान, फ्रेंच गुयाना और जापान में 100 से अधिक मिशन शुरू किए गए थे, ताकि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट मिशंस, और उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उनके रिसर्च को हम लोग स्टडी किया करते हैं, है ना? सो यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. फॉर एग्जाम्पल, IIS serves as our gateway, that I told you. It is a docking station. International Space Station serves as gateway to deep space destination like Mars, right? Like in near future, we will explore more the Titan, that is the satellite of Saturn. One of the satellite of Jupiter, name is Europa, where there is possibility of life, जहां पर जीवन की संभावना है. तो यहां पर ये एक गेटवे के तौर पे काम करता है. ISS in every 90 minutes, around 90 minutes, it completes its one cycle, like 27,700 kilometer per hour. It used to rotate, and we can also track the location. Where is currently the International Space Station? We can easily track. So International Space Station orbit the Earth in every 90 minutes at a speed of around 27,700 kilometers. So you know what? The low Earth orbit satellites, used to float in below 2,000 kilometers, and they used to rotate very fast, low Earth orbit. So this is the speed, and even at this speed, the personnel, the crew member, they are having the spacewalk. What is a spacewalk? Let me tell you everything.
So this is the speed, and in 90 minutes it covers its complete round around Earth. So this is the movement of International Solar Station. It used to move above India as well. So this is all about the timing, at what speed it is going, what is the altitude, longitude, everything is given here. So you can check the current location of International Space Station on this, right? So you should know this also. And see, normally what happened in International Space Station, around 3 to 6 crew members are there, and spacewalk, there is a procedure of spacewalk whenever there is any kind of failure of equipment, or in case any part of the International Space Station is not working. In that case, the crew member used to do spacewalk. They used to recover the defected part, and for dedicated replacement we used to send humans if there is any such type of situation held there. And in a space station there is a proper procedure that humans can easily, it is not possible that easily dock. It is really a complex technology. India is also doing work on this. Even China has sent its International Space Station successfully, and India will send its International Space Station in 2030 to 2035. So this is our target, right? This is our target. So spacewalk are performed to install new component to International Space Station, to retrofit system and module and equipment to monitor, set up and recover scientific experiments, right? So this is all about International Space Station. Here there are Suzanne Jan Helms and James Shelton Walsh on 11th March 2001. They did the longest ever spacewalk. They were out of the space station, which has the speed of 27,700 km/h, but they go outside up to 8 hours 56 minutes. That is longest ever spacewalk. It is really tough. If in a minutest particle came in contact with any of the astronaut, it can cut permanently, can go through from one place because speed is very fast there. So Commander Sergei Kriklev, he spent the maximum days in International Space Station. That is, it was 803 days he spent. This is the maximum one. So this is called extravehicular activity. They used to come out for a particular task. This is extravehicular activity. Fridays, all women spacewalk they had sent. So spacewalk, so that if there is any difficulty in the process of International Space Station, if there is anything that is making International Space Station malfunctioning, so people used to send there, right? So हम लोगों को भेजते हैं. एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में मुख्य कठिनाई, जहां अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक एक सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं, निकट शून्य ग्रेविटेशनल क्षेत्र का, ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटेशन है, उसका इंपैक्ट होता है. दे नीड टू एक्सरसाइज, एंड ऑलमोस्ट ऑल एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस स्पेस सिकनेस. Space sickness is a special type of disease. It is mental and physical, both traumatic disease. By the time they were in a spaceship, in the absence of gravity, body fluid rose their head. So body fluid means blood raised over their head and gave them stuffy noses, right? नाक हमेशा भरी रहती है, nausea, चक्कर आते रहते हैं, headache, and they need to work hard, right? So they had to work hard. Now next is his heartbeat slowed down because it wasn't
for him to work so hard in space. So basically, there is no work in space. It is not that easy to work in space. So the heartbeat used to slow down because there is even less pressure. So ISS equipped with a gym with exercise machine such as treadmill and ergometer. Astronaut exercise for about 2 hours a day to keep their body working and a normal blood flow, right? So another problem is faced by the energy lost by the space station due to Earth's tidal effect on it, and spacecraft would slowly spiral towards Earth. Burning most of the space, large part may still manage to survive. So actually what happened? The tidal flow, because Earth's gravitational pull, there is a tidal flow, and the tidal flow also affect our blood. So this also affect the blood of the astronauts, but it could cause considerable damage if it land in the city. So in this way, International Space Station, they had to manage, right, somehow their life. Construction of toilets also provided a challenge. With a little imagination, you can see what happened in the waste emitted in near zero gravity. Can you think, if waste or excreta near zero gravity, it will spread all around. If water is in one drop water, it will splash all around and it will roam here and there. So in the same way, astronauts strap their bodies to toilets so that they don't float away. Then vacuum cleaner like machine is operated to dispose the waste. So there is vacuum cleaner like machine that dispose of the waste. So in this way, the temperature and humidity are controlled, like in aeroplane, the temperature and humidity are controlled and astronauts can stay comfortably. Therefore, astronauts do not need any special attire except for orange flight suit worn during the launch and re-entry. Astronauts dress the same way we do on Earth, but if they are in space station, they used to wear the orange suit, right? So this you should know. Now, astronaut cannot take shower because water will splash. Wash their hand via a wet cloth. Want to clean their hand or face, they can either clean themselves with alcohol or use towel dampen with the liquid soap. When astronauts wash their hair, they use waterless shampoo. They do not need the water. They need waterless shampoo. Without water, they clean their hair, and in this way, it is really challenging or tough to live in International Space Station. It is really challenging. So यहाँ पर देखेंगे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब भी कभी किसी को कुछ खाना होता है, वाटर पीना है, सो हमेशा पाइप की मदद से, वो भी पूरी तरह से सील्ड पैक्ड होता है और उससे पानी पिया जाता है, अदरवाइज वो स्प्लैश हो जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन में खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर गर्म करने के लिए एक ओवन प्रदान किया जाता है। अंतरिक्ष में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है, इसलिए खराब होने से बचने के लिए अंतरिक्ष भोजन को संग्रह किया जा सकता है। सो अंतरिक्ष के भोजन को भी कलेक्ट किया जा सकता है, राइट। खराब होने से बचने के लिए अंतरिक्ष में भोजन को संग्रहित, मतलब सो मस्ट बी स्टोर्ड इन अवॉइड स्पॉइलेज। सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड देयर, ओवन इज देयर, राइट। सो लाइव डेटा पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि माइक्रोग्रेविटी पर उनकी लाइफ कैसी चल रही है, और इन सभी रिसर्च से हमें बहुत से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्राप्त हुए कि कैसे भविष्य में हम किसी अन्य प्लैनेट पर, सैटेलाइट पर मूव करेंगे। द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्टडिंग, टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर यूज इन द फ्यूचर एक्सप्लोरेशन मिशन such as spacecraft, material system and characterization and control the microgravity environment on International Space Station. So in microgravity environment, what is the impact on our body in a longer run, and whenever we go to some other planet, so in this way we should understand, we should take care
each and every dimension. So with the help of International Space Station, we are not only working on astronomy, we are not only working on physics, but also we are understanding biology, astrophysics, biomolecules, the polymers, right, colloidal solution, and on various things we are researching. India is also researching in that. So India is going to send its own International Space Station in 2030 or 2035, in between. So France and Russia, these two countries are helping us. तो ये दो countries हमें मदद कर रहे हैं. जीव विज्ञान का अध्ययन, सेल्युलर जीव बायोलॉजी means the study of biology or biology using microgravity condition to obtain information about impact of space environment on space organism, including cellular biology, biotechnology and plant biology. इन सभी एरियाज पर रिसर्च होता है. राइट, सो ये सभी वो डायमेंशंस एरियाज हैं जिन पर रिसर्च होता है. एंड वन मोर पॉइंट, exploration human research for human medical research to develop knowledge needed to send humans exploration mission beyond earth orbit, and these studies focus on impact of space flight on human health and countermeasures to reduce future health risk from space flight. Areas of emphasis include physiological studies and impact on a human body, everything on microgravity, physiological phase, and also psychological study, and the space sickness. We need to understand that, because those who have that tough mode, them only we can send in space, because those all who used to fly a plane, they have that capacity. So normally what happened, the personnel who work in Air Force, they used to send for the space station. So observation of Earth, education activities and investigation, allow student, the public to engage with the International Space Mission, and in this way these all things you must be covered, right? So I think everything is clear to you now. What is the conclusion? In 2011, US Space Shuttle program ended in 2011. Soyuz became the sole provider of rocket transport. Soyuz is what? It is Russian. Soyuz, it is Russian. Sole provider of rocket transport for astronaut in International Space Station. But now Russia departed from the International Space Station. Now Russia is not part of International Space Station. Yes or no? Russia is not the part of this, and Russia is going to launch its own space station, and that is why who will send the humans or astronaut to the International Space Station? Now the SpaceX created such system कि SpaceX के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो स्पेस में मिशंस के साथ साथ ह्यूमंस को भी भेज सकता है. वी एक्सपेक्ट कि जल्द ही भारतीय मूल का भी कोई वैज्ञानिक या फिर जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस स्टेशन पर जाएं, जो कि नहीं भेजा जाएगा वैसे, बिकॉज वहाँ पर वो जापान के, कनाडा के अपने ही लोगों को भेजते हैं. नियर फ्यूचर वी विल हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन, एंड दैट इज वाई हम लोग गगनयान मिशन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. गगनयान मिशन की मदद से हम लोग फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट स्पेस में सेंड करने वाले हैं, और शायद कुछ ही मंथ में, विद इन ईयर वी विल सी सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसे कहा जाएगा गगनयान मिशन, राइट? सो दिस इज द कंक्लूजन. नाउ सी, वी विल डिस्कस मोर टॉपिक, डोंट वरी, we will discuss many topics. Right now one topic is completed so far. अभी केवल एक ही टॉपिक कवर हुआ है. Now हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
यू आर गेटिंग अ नंबर, आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके और कॉल करके बात कर सकते हैं। ये जो बैच है पूरे स्टेट सिविल सर्विसेज का, उसमें कौन कौन से स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर सकते हैं। आप लोग हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, राइट। तो इन राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन द बैचेस एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इफ यू यूज दिस कूपन कोड RG Live. If you apply this coupon code RG Live, then you will get maximum discount in any state civil services. So please do confirm in comment आप लोग किस राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. Please do comment in the chat box. Right? Got it? So if anyone is preparing for state civil services examination, they can simply join these batches and the price will be of 9,999. It is because of holy sale, that is why अभी आपको ये prices discounted price में आपको batches मिल रहे हैं. तो I think आपको ये सारी बातें एकदम clear हो गई होंगी. Right? Now we will discuss Navik. So what is Navik here? Navik is, this Navik name came from Navik. Navik means navigation with Indian constellation. Navigation with Indian constellation. And this name was given by PM Modi. The another name of Navik is Indian Regional Navigation Satellite System. So it is Indian Regional Navigation Satellite System. Indian Regional Navigation Satellite System. So it is what? Indian Regional Navigation Satellite System, IRNSS. You should know this. Right? So Navik, this name is given by PM Modi, and IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System. So basically we sent total 7 satellite. We have sent total number of 7 satellite. Among these 7 satellite, there is atomic clock, and it used to cover India's all the areas of India. So this is India, and it's 1500 kilometer radius. 1500 kilometer radius. This area is covered by these Indian Regional Navigation Satellite System, and there are 3 satellites we send in geostationary orbit. We send in geostationary orbit, and 4 satellites we sent in geosynchronous orbit. So you should know this, geostationary and geosynchronous orbit, right? Geosynchronous, geostationary orbit, what is the difference? So if it is parallel to equator, then it is geostationary satellite, and if there is any particular angle, so it will be geosynchronous. So if this, in these 1, 2 and 3 satellites, then it is geostationary 1, 2, 3 and 4.
So these satellite will be called total number of 7 satellites will be there, right? Got my point? My name is Rudra Gautam and I used to take classes of science and technology. If you are not aware about me, please search my name Rudra Gautam and you will get all my information, right? You can also join my Telegram channel, everyone, Rudra Education Hub. So you can also join this Rudra Education Hub, right? So in this way, you can see here India's 1500 kilometer area, right? 1500 kilometer area of India, like Pakistan, China. We can take a look on that. There are two different conditions, like for general purpose, that is related to the normal human beings can use in their mobile phone, the GPS, like we use GPS. And the second structure is what? These can be used for the military purpose use. So strategic purpose also we are using, and general purpose we are also using Indian Regional Navigation Satellite System. So IRNSS, basically we started to sending IRNSS in 2013, and in 2017 we sent all the 7 satellites. 2 satellites were failed. So there is issue in the atomic clock, because all the ground movement, right, can be traced by this. So Indian Regional Navigation Satellite System is this, right? And it is around 1420 crore rupees was infused in regional positioning system. Now we can take a look on China, what it is doing on the frontier, and on Pakistan, what it is doing on frontiers, what is their movements, etc. We can easily trace, right? So I think it is clear to you, and this is what नाविक, right? So भारत का क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, जैसे एक यूपीएससी में भी प्रश्न आया था, you must have heard about this, बेडू GPS, GLONASS, GPS, Beidou, GLONASS, GPS, Beidou, and Galileo. These are the global positioning system which covers the complete world. Beidou, it is of China. GPS, it is of USA. GLONASS, it is of Russian Roscosmos. And Galileo, it is of European Space Agency. And here QZSS and IRNSS, this is of Japan's. And these two are basically regional positioning system, and these are global positioning system. So QZSS is quasi zenith satellite system. This question was there, QZSS is related to which country? So it is Japan. And IRNSS is also called NAVIC. And basically these regional positioning system, what is the requirement for India? Why India worked on that? Basically, we requested America kindly provide the location of enemy of Pakistan who are sitting there on the peaks of Kargil and the Dras sector, etc. But उन्होंने हमें ये, जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया भाई प्रोवाइड कर दो, उन्होंने जब हमें प्रोवाइड नहीं किया
It was in 1999. Then we decided that we will have our own positioning system, and we created our own regional positioning system. Is it clear? Okay. So this is all about this regional positioning system. Bharat ke, see, the approval of India's regional navigation system will encourage commercial use of navigators by international and domestic mobile equipment manufacturer. Now you can see here, geosynchronous orbit, there are 4 geosynchronous, or geostationary orbit, there are 3, geostationary or geosynchronous. So what are the applications? Standard positioning means for all users, and restricted services for the security agency. American GPS have total 24 satellites. Our IRNSS consists total 7 satellites. So in this way you should know this: 3 in geostationary, 4 in geosynchronous satellites are there. Now one more important topic, that is Gemini. You must have heard about Gagan also. Gagan. What is Gagan? What is Gagan? GPS aided geo augmented navigation. GPS aided geo augmented navigation. GPS aided geo augmented navigation. So this is called Gagan. This is called what? This is called Gagan. So Gagan enable mariner instrument for navigation and information. So see, basically what happened? We are using Gagan for what? Do you know that? What is the application of Gagan? Gagan is a satellite system in which we are using GPS satellite, that of American GPS 24, and then we added 3 more satellites from Indian satellite. Now all the flights of India's, when they are landing, the safe landing, this Gagan is working with that. Gagan is providing the pinpoint precise information of flight landing, and this Gemini is related to Gagan. So Gagan is what? GPS of America plus 3 satellites. Now what is Gemini? Gemini is related to the infrastructure, related to the navigation and information of fishermen, because whenever fishermen moves in sea, oceans, it impacts their life if there is any kind of cyclones there. So Gemini अर्थात गगन आधारित समुद्री संचालन और जानकारी उपकरण, गगन enabled mariner instrument for navigation and information. This is what Gemini, right? This is what Gemini. So Gemini is a soap box device fitted to fishing boat which have a receiver. So all the fishing boats, a soap box size device fitted to the fishing boat, and servers in Incois, Hyderabad will receive data on various ocean parameters including sea surface temperature and speed and direction. So if in case any kind of cyclone etc., we can identify. So Gagan is used by Airport Authority of India for the aircraft landing takeoff. Incois is tied up with the Airport Authority of India technology. It's Gemini device. So Gemini device is a device, and you can see here basically the Gagan satellite using GPS plus GSAT, the 3 satellite GSAT, the GSAT 8, the GSAT 10 and the GSAT 15.
GSAT 10 and the GSAT 15, right? So these three different satellites. Gemini sends the information to a mobile application downloaded by fishermen through Bluetooth in all regional languages, right? So you should know this all. Now, one more topic we are going to discuss related to international space missions, that is HOPE. You know, Al-Amal, the HOPE mission, it was sent by United Arab Emirates. So, United Arab Emirates with the help of Japan. So, this is the HOPE mission. And now, United Arab Emirates expecting that they will establish a city in 2117 year, they will have a city on Mars. They will have a city on Mars. So यह मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा, मंगल के वायुमंडल की कार्य प्रणाली और बाह्य अंतरिक्ष और सौर पवनों के साथ इसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा। जो बाह्य अंतरिक्ष है मंगल ग्रह का, वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, उन सब पर रिसर्च करेगा होप स्पेसक्राफ्ट, राइट? नाउ you can see here, this is Earth and this is Mars. So when Earth, see, you can see here, whenever it throw, basically if when Earth moves almost parallel to the Mars, we used to send at particular time, and it is of around 2 years. After every 2 years we see one thing, that whenever we send this satellite, जब भी हम लोग सैटेलाइट को भेजेंगे पृथ्वी से मंगल की ओर, तो वो मिनिमम 10 महीने का समय लेगी। सो यहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर होंगे। सो दिस इज व्हाट अल अमल द होप मिशन, इट वाज सेंट बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन द सेम वे पिछले दिनों में चाइना ने भी मंगल पर सफलता प्राप्त की। India was the 4th country to sending a mission on Mars. It was in 2014 our Mars orbital mission reached on Martian atmosphere. Now this HOPE mission is related to United Arab Emirates. With the help of JAXA, they sent this mission, right? And what are the objectives of United Arab Emirates? It will study the Martian climate, both daily and seasonal cycles. It will observe Mars weather phenomena, including its massive dust storm, interaction between the upper and lower layers of the Martian atmosphere. It will explore the connections between today's Martian weather and the ancient climate of the planet, red planet, right? Because ancient climate was different, and now the climate is very different. So this is the mission's objectives are. So now one more point. In the meantime of 2020, China also sent a mission named Tianwen-1, and this Tianwen-1 mission was also sent at the same time or contemporary of this Al-Amal the Hope mission and अमेरिकाज परसिवरेंस मिशन। तो ये सभी मिशंस सही समय पर, सेम समय पर भेजे गए। सो फास्टेस्ट रॉकेट इन चाइनाज हिस्ट्री, रीचिंग एन एस्केप वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यू नो व्हाट, हम लोग जो अपनी सैटेलाइट को भेजते हैं ना, हमारे मतलब इंडियंस PSLV और GSLV से, तो बेसिकली इन लॉन्च व्हीकल की स्पीड कोई 11.2 किलोमीटर नहीं होती है, जो कि एस्केप वेलोसिटी के बराबर है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के बाहर इस तरह से सैटेलाइट को ऐसे घुमा घुमा के और फिर बाहर भेजते हैं। सो Tianwen-1 मार्क द लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट फैमिली फर्स्ट प्रैक्टिकल मिशन एंड द सेकेंड फ्लाइट ऑफ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट सीरीज विद इन 80 days. लॉन्ग मार्च 5B's लास्ट मिशन वॉज ऑन May 5th, right?
So it is China's heaviest deep space probe Tianwen-1 Mars probe, weight 5 ton, and it is about long march 5 meter diameter, and this Tianwen is also rotating, revolving around Mars, and this is the Perseverance mission, the robotic device. So this was sent by America on Jezero crater. It was sent to Jezero crater. Jezero crater of Mars. This is the robotic device, and this robotic device along with this plane, a small helicopter like structure, right? So it was also sent there along with Perseverance, and it used to fly and used to collect data. So actually this Perseverance mission having very advanced structure, this robotic device is researching on the Martian land. So this is what Perseverance instruments, right? So these are the Perseverance instruments. Perseverance mission is see, this is how they got success on Mars. In this way, this Perseverance mission having this soft landing, right? So in this way, we can see here there are various type of missions, space missions, and you should know this because on these areas you will have multiple choice questions, means answer writing. Like you can see here the Clear Space 1 mission, and Clear Space 1 mission is related to space debris को remove करना है ताकि स्पेस में जो मलबा है वो कम हो सके. सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2025 में पृथ्वी की कक्षा से अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए 4i रोबोटिक चेजर को प्रक्षेपित करने की योजना बनी. चेजर को स्विट्जरलैंड की एक स्टार्टअप कंपनी क्लियर स्पेस 1 के अंतर्गत विकसित किया गया. एक बार अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने के पश्चात यह अपने रोबोटिक आर्म की सहायता से अंतरिक्ष मलबे के चयनित खंडों को एकत्रित करेगा और फिर नियंत्रित रूप से, कंट्रोल रूप से वायुमंडल में लाएगा और फिर उनको आपने ये नाम भी सुना होगा, पॉइंट नीमो एक ऐसा स्थान है जो किसी भी हैबिटेबल प्लेस से सबसे ज्यादा डिस्टेंट लोकेशन पे, एंड इट इज इन द पैसिफिक ओशन. तो यहां पर इन सभी को लैंड करवाया जाएगा. तो इस तरह से हम लोग क्लियर स्पेस, देखिए इस प्रकार से स्पेस को कैच करके और फिर उनकी स्पीड को यदि कम किया जाए, क्योंकि यदि एक रेगुलर स्पीड से यदि ऑर्बिट करती रहेंगी सैटेलाइट तो वो हमेशा घूमती रहेंगी, लेकिन यदि स्पीड को कम कर दिया गया तो वो एक समय पर पृथ्वी पर आ गिरेंगी. स्पीड को ज्यादा कर दिया गया तो और वो बाहर निकलती चली जाएंगी. सो इन दिस वे दिस सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी देयर फॉर क्लियर स्पेस 1 मिशन. सो आई थिंक आपको बहुत से मिशंस आज के इस लेक्चर में अच्छे से समझ में आए होंगे. यू मस्ट हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक. सो इफ यू लाइक दिस सेशन, if you like the session, please do like and share the session and subscribe the channel and press the bell icon. Now let me tell you one of the most important point here is, if you are preparing for any state civil services examination, for example, let's assume you are preparing for Jammu Kashmir, you are preparing for Punjab, you are preparing for Haryana, you are preparing for UP, you are preparing for Bihar, you are preparing for Assam, you are preparing for MP, or it is Odisha or Madhya Pradesh, Maharashtra. So you can prepare well, and because of this holy season you are getting maximum discount. So you can use the coupon code that is RG Live. You can use my coupon code RG Live and you can enroll in these batches. So it will cost you around 9,999 per batch. It will just cost you
9,999, and at this price you will get the all batches, right, related to any, and you will get आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स मटेरियल, मॉडल आंसर्स, प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज हैं, इसके अलावा स्टेट जीके, सीसैट और सभी का कंपाइलेशन, आंसर राइटिंग, एंड हर क्लास के बाद में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं. सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बैच एंड यू विल बी असाइंड ए मेंटोर, और आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी इफ यू join this batch via RG Live coupon code. So thank you so much everyone, and you can purchase this batch from this. You can simply go to StudyIQ website. This is the StudyIQ website, and on this website you need to go below and you'll see one thing. आप लोग थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, या तो आप ऐप पर जाइए, स्टेट सिविल सर्विसेज के इन बैचेस में जाइए वेबसाइट की मदद से, एंड यू विल सी हियर देयर इज होली सेल एंड यू आर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स. सो वेदर इट इज पंजाब पीसीएस, प्रगति मीन्स ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, then you can join these batches. And if you are going to join any batch, आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटेटेड हैं कि आपको पीडीएफ, ऑथर्स कौन कौन होंगे, बाय नाउ पर क्लिक करना, आपको ये सभी लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग, ये सभी प्रैक्टिस सेट और एवरीथिंग यू विल गेट हियर. सिंपली आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई करना है RG लाइव कूपन कोड, और जैसे आप लोग RG लाइव कूपन कोड लगाते हैं, in all these batches of the state civil services you will get a discount of 2,500, और ये बैच आपको 9,999 में मिल जाएगा. सो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर होंगी. सो विल मीट सून ऑन एवरी वेंसडे, विल मीट, राइट, वी यूज टू मीट इन each and every segment, and we are covering everything. So do like and share the channel. God bless you all. Jai Hind.